Hello students, so let's start with today's biology class. So in the last class we have started with kingdom Plantae, in which I have told you something about the classification, means which groups we are going to study, and the division Thallophyta we have started, in which we were studying about algae. So algae, I have told you we are going to study three types of algae, that is green algae, brown algae and red algae. Green algae we have already discussed. Now the next one is the brown algae, which is also called as Phaeophyceae. So it is aquatic and generally found in marine water or brackish water. It generally shows variations in size and forms, because if you will see morphologically, it may vary in the structure. When you will see the examples, the structure of different algae, then you will find that different structures are there in this case. Like it can be simple branched, थोड़ा सा इसमें ब्रांचिंग आ जाती है. जैसे हमने थैलोफाइटा में पढ़ा है कि वो बिल्कुल थैलस लाइक होते हैं, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है क्लोरोफाइसी वो कम्प्लीटली थैलस है, लेकिन फियोफाइसी में हल्की सी ब्रांचिंग आ जाती है. ठीक है, तो सिंपल ब्रांचिंग भी हो सकती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच मीन बहुत सारी ब्रांचिंग भी हो सकती है, और फिलामेंटस भी हो सकती है फिलामेंट्स की फॉर्म में, जैसे कि ग्रीन एल्गी थी, जैसे स्पायरोगायरा वगैरह, यूलोथ्रिक्स वगैरह हमने कल देखा. ठीक है, देन क्लोरोफिल इज ए एंड सी टाइप. उसके अलावा इसके अंदर कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अलावा, और फ्यूकोजेंथीन होता है, जिसकी वजह से इसको ब्राउन कलर मिलता है. ठीक है, प्लांट बॉडी अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो किया आपको ब्राउन एल्गी का, दैट इज़ लेमिनेरिया. ये एक लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है. तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरह से थोड़ा सा प्लांट के रिजेम्बलेंस हल्की सी दिखाई देगी. अदरवाइज़ ये माइक्रोस्कोपी की है कि आपको इस तरह जैसे प्लांट्स हमें दिखते हैं वैसा नहीं है, ये माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हल्का सा प्लांट से मैच करेगा. इसके अंदर क्या होगा, नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट जो है रूट्स की तरह एक्ट करता है, जैसे प्लांट्स में रूट्स होती हैं वैसे ही होल्ड फास्ट है. ये सबस्ट्रेटम पे अटैच करने में हेल्प करता है. होल्ड मीन्स अटैच करना. ये बीच में इसके स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको अपर स्ट्रक्चर से ज्वाइन करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टाइप. एंड दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट अ लीफ प्रॉपरली बट अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड फ्रॉन्ट. ठीक है, तो ये एक प्लांट बॉडी है जो कि प्लांट बॉडी बोल सकते हो, मीन्स जो इस ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लांट, सो इट्स बॉडी इज़ लाइक दिस, नॉट कम्प्लीटली प्लांट लाइक बट हल्की सी जो आपको रिजेम्बलेंस दिखाई देगी. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ऑब्वियसली बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सेक्सुअल एसेक्सुअल इज थ्रू ज़ोस्पोर्स, और इसके जो ज़ोस्पोर्स होते हैं वो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह ज़ोस्पोर्स और दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, मोटाइल होते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकती है और एनाइसोगैमस भी हो सकती है. वही सेम आइसोगैमस में सेम गैमेट्स होंगे और एनाइसोगैमस में टू डिफरेंट गैमेट्स होंगे, जिसमें वो ओगैमस भी हो सकती है. उसी तरह से ओगोनियम होता है जिसके अंदर जो है ये गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं एंड देन दे कम्स आउट फॉर फर्दर डेवलपमेंट. एग्जाम्पल्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सरगेसम, फ्यूकस and laminaria. So these are the examples of brown algae. Let's see the third one, that is Rhodophyceae, red algae. So the third type of algae is Rhodophyceae, which is also called as red algae. The red color is because of the red pigment phycoerythrin present in it. It is generally marine and found in marine water, and it is generally found in the upper surface of the water. As you move down or penetrates in water, the amount of red algae reduced. Its body is in the form of a thallus, undifferentiated, or sometimes it can have a complex structures depending upon the type. Reproduction is either vegetative, asexual or sexual. Vegetative is by fragmentation. Asexual is through non-motile spores. Like in the others two, there were zoospores, they were motile, but in this case they are non-motile.
and sexual reproduction is also through gametes, but the gametes are again non-motile. Examples are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. I will show you the pictures of these all. So this is all about division Thallophyta or algae, which is the first division of kingdom Plantae. Let's see the next division, that is Bryophyta. So let's see the next division of kingdom Plantae, that is called Bryophyta. So its habitat is, it is found in the moist shaded area in the hills. So it is generally found in the terrestrial region like in soil and mostly in the moist areas in the hills. They are called, it is very important point, that they are called amphibians of plant kingdom. So you know that amphibians are those organisms which can live in water as well as on land. Why they are called so? Why they are called amphibians of plant kingdom? Because they live in soil in the moist conditions, but for sexual reproduction they requires water. The gametes which are formed are fused with each other in the presence of water. That is why they require both type of habitat, soil, that is terrestrial as well as aquatic. So they are called amphibians of plant kingdom. Next is plant body. Plant body is thallus-like, which is with undifferentiated roots, stems or leaves. Actually the plant body is like a thallus, means there is no proper differentiation of root, stem or leaves, but we cannot say it completely thallus, as it has root like or stem like or leaf like structures, but not the proper differentiation of root, stem or leaf. Means आप उसको देख के as such बिल्कुल exact leaf, stem या root वाला structure नहीं कह सकते हैं. They have root like structures which are called rhizoids. Otherwise they have some stem like structure or leaf like structure, but they are not properly differentiated. And the main plant body is haploid. You know that the organisms can be either haploid or diploid. Depending upon that, the main plant body, there are different types of life cycle: haplontic, diplontic, haplodiplontic. So these are three life cycles that we will study in detail after this finishing this plant kingdom. But before that, I want to tell you that the main plant body of these organisms is haploid. It means that for gamete formation they need not to do meiosis, they have to do just mitosis and to form gametes. You know that there are two types of cell division, mitosis and meiosis. In class 9 you have studied well. And in mitosis the division takes place in which the diploid organism will form, diploid cell will form diploid cell, and in meiosis the diploid cell will form haploid cell. So in case of gamete formation generally meiosis takes place, क्योंकि जो gametes होते हैं वो क्या होते हैं, haploid होते हैं. बट इसमें क्या है कि प्लांट बॉडी पहले से ही हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे मियोसिस करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली गैमेट्स फॉर्म कर सकते हैं माइटोसिस से, डिवीजन से. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, बिकॉज इट डायरेक्टली फॉर्म्स गैमेट्स बाय नॉर्मल डिवीजन. Next is sex organs. They have multicellular sex organs. Like you know, in case of algae or Thallophyta, the sex organs were not well developed. They were unicellular, non-jacketed, uncovered. They were not so differentiated, not so visible. But in this case, the sex organs are not properly present, but still they are more advanced than algae. They are multicellular. So they have male and female different sex organs. Male sex organ or multicellular structure is called antheridium and female one is called archegonium. So these are the new terms for you. Male is called antheridium because these terms we will use again and again. Male is called antheridium and female is called archegonium. Antheridium produce male gametes which are called antherozoids, जिनको हम क्या बोलते हैं, antherozoids. और females they produce female gamete, a single female gamete which is called egg. जैसे नॉर्मली होता है मेल गैमेट्स ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल गैमेट सिंगल होता है. सो दिस इज द सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स.
Then they show sexual reproduction by formation of male and female gametes which fuse with each other, and they require water for their fusion. We will study life cycle of bryophytes in detail. And in case of bryophytes, there are two major groups where we are going to study, that is mosses and liverworts. Mosses and liverworts. So we will take up these one by one.